about our chapter light that you have already studied in 6th standard. So, can anyone tell me what is light? Yes, light is the form of energy that enables help us to see all the things around us. Yes, very good. Light is a form of energy that help us to see things around us. Now, sit down, Bacha. I have a laser light and these are two CDs. You have to observe what is happening here. I am going to flash this light. Can you observe it on the other side? Yes. Yes. If I put this disc out and now I am going to flash this light, can you observe it outside? No. No. Udhar. No. So, what is happening here? This object tells us that light travel in a straight line or straight path. हुआ क्या यहाँ पे, जब मैंने इन दोनों में से लाइट को पास किया उधर चलेगी. अगर मैंने इसको एज ऑब्स्टेकल यूज किया कि लाइट के पाथ में कोई और चीज आ जाए तो क्या होता है, लाइट जो है वो फुली ट्रेवल नहीं करती. तो दैट मीन्स लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ. सो नाउ आई हैव एन ऑब्जेक्ट. कैन यू ऑब्जर्व लाइट? So which type of object is it? Opaque. Why it is opaque? क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो वन साइड से दूसरी साइड पे पास नहीं हुई. That's why this is an opaque object. I have one another thing. Now can you observe light? Yes. Which type of object is it? Translucent. Why it is called translucent? Because क्यों? क्योंकि इसमें से जो लाइट है वो कम्प्लीटली पास नहीं हो रही. यहाँ से आपको दिखाई दे रही है बट बैक साइड में दिखाई नहीं दे रही. तो दैट मीन्स इट इज अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. नाउ आई हैव वन अनदर. नाउ कैन यू ऑब्जर्व लाइट? Yes. You can observe it on the roof. So which type of object is it? Transparent. Transparent. It is a transparent object. Now, what is the difference between these three? In case of opaque object do not allow light to pass from one side to another. In case of translucent object, they partially allow the light to pass from one side to another side. But in case of transparent material, they allow fully light to pass from one side to another. So now I have a mirror. Yeah, I am going to flash light on it. Can you observe what is happening here? Yes. I am flashing this light on the mirror and it bounces back on the roof. This phenomena of light is known as reflection of light. What is happening here? हो क्या रहा है, मैंने लाइट को फ्लैश किया, सरफेस पे स्ट्राइक की एंड इट बाउंसेस बैक ऑन द रूफ. लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ the ray of light that strikes to the mirror is called incident ray. This is called incident ray. Suppose this is the surface of mirror. Suppose it as a mirror. Now light falls on it. जो लाइट मिरर पे पड़ रही है, this is called incident ray. And this point is called point of incidence. This point is called point of incidence. And the light that goes back, this ray is called reflected ray. This ray is called reflected ray. Are you getting my point? What is happening here? First of all, light fall on the mirror. जो रे इस पे पड़ रही है that is called incident ray. जो रे वापस जा रही है that is called reflected ray. Now we assume a normal here. This is called normal.
the normal is called angle of incidence. What it called? Angle of incidence. Incidence. Now assume it as I, and the angle between the normal and reflected ray is called angle of reflection. Angle of reflection. Reflection. Now, what is the most interesting thing is here that angle of incidence and angle of reflection both are equal. That means I is equal to R. This is called law of reflection. What it called? Law of reflection. If someone asks you what is law of reflection, you have to say that angle of incidence is equal to angle of reflection. यहाँ तक clear है? Yes. Now, I am going to use smart board. Can you see the objects present in this room? No, because there is no light in the room. We can see objects only in the presence of light. Light makes things visible to us. Let's study some properties of light. जो हमने अभी डिस्कस किया कि लाइट हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में. अगर रूम डार्क है तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा. ऑन दी अदर हैंड अगर लाइट है तो यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. Now I have a quiz for you. First question is, don't give collective answer, only raise your hand. The change of direction of light by a mirror is called dash of light. Reflection, reflection, bending or turning. Ma'am. First is reflection. Very good. The change of direction of light by a mirror is called reflection of light. Now next one is light travels along dash lines. Straight, curved, circular or angular. Straight. Last is straight. Straight. Very good. We have discussed it now with the help of series that light travels along a straight lines. Next one is dash is not a light reflective surface. Water, mirror, wood or stainless steel. Second is wood. Wood will not reflect light from its surface. Now we are going to discuss the characteristics of plane mirror. I want your help. Someone come. Hold it like this.
have a paper. I'm going to place it in front of the mirror, and I have this cartoon character. Do you know its name? Yes, it's Doraemon. I knew that it will bring smile on your face. I'm going to place it in front of the mirror. Now, last steps, come outside. Come from this side. Can you count the boxes? कौन से बॉक्स में डोरेमोन खड़ा है? 1, 2, 3, 4. Doraemon is standing in 4th box. Now, can you count it in the mirror? Mirror. 4. Count it in the mirror. It is in the mirror. It is also 4th box. So, what is happening here? I am going to explain it. That the distance between the object and the mirror is equal to distance between the mirror and the image. जितना दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी दूर अंदर इमेज बन रही है. तो इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज. दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर. नाउ ऑब्जर्व इट अगेन. अगर आप इसको मिरर में देख रहे हो, इसका हेड जो है वो ऊपर वाली साइड पे है. बाहर भी मैंने इसको ऊपर वाली साइड पे रखा है इस तरीके से, और मिरर में भी इसका हेड ऊपर नजर आ रहा है. इसके लेग्स या फुट जो है वो नीचे हैं, मिरर में भी नीचे नजर आ रहे हैं. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड दैट प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज. इरेक्ट मीन्स बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट, जैसा हमें दिख रहा है. टॉप इज ऑन द टॉप, बॉटम इज ऑन द बॉटम. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. वन मोर थिंग, अगर आप इसकी इमेज देख रहे हो तो ये बिहाइंड द मिरर बन रही है. बिहाइंड द मिरर बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है. This is the third characteristics of plane mirror, that the image formed by a plane mirror is behind the mirror. What we have discussed till image formed by a plane mirror is behind the mirror, and distance between the object and mirror is equal to the distance between the mirror and the image. Third one is image formed by a plane mirror is always erect. Now I have one more thing. Can you read it? Yes. No Ambulance. But is it written like this that you write in your notebook? जैसे आप नोटबुक पे लिखते हो, क्या ये वैसा लिखा है? No, ये उल्टा लिखा है. Now I am going to place it in front of the mirror. See what will happen. It is ambulance. यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है. This property of plane mirror is called lateral inversion. This characteristic is called lateral inversion. So we have discussed its lateral inversion. Now अब एक और बात, image are of two types, real image and virtual image. Now I am going to explain the difference between real image and वर्चुअल इमेज. रियल इमेज क्या होती है? जो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती है, जो हमें स्क्रीन पे दिख सकती है, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज. एंड द इमेज दैट वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. नाउ कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर? Which type of image is formed by the plane mirror? Real or virtual? It's virtual because we cannot obtain it on the screen. क्योंकि हम इसे स्क्रीन पे obtain नहीं कर सकते. जो मिरर के अंदर वाला वर्ल्ड है वो वर्चुअल है, तो जो भी इसके अंदर इमेज बन रही है that is called virtual image. So these are the 6 characteristics of the plane mirror. Now we will discuss it with the help of board.
Don't make noise. This is the image formed by a plane mirror. To start making the diagram of image formed by a plane mirror, first draw a horizontal line and label it as PQ. Draw small inclined lines that intersects the horizontal line. This represents the opaque side of the plane mirror. Draw a point O on the reflective side of the plane mirror. This point represents the object. Draw two rays from the point O towards the plane mirror, intersecting the mirror at points A and B. Draw normals AM and BN to the mirror at points A and B respectively. Measure angle OAM using a protractor. Draw an angle MAX equal to angle OAM. Now, measure the angle OBN using a protractor. Draw an angle NBY equal to angle OBN. Extend the rays AX and BY backwards till they intersect at a point I. Draw an eye to represent the observer. The observer sees the image of the point object O at point I in the plane mirror. Yes. What they explain here कि यहाँ पे O पे कोई ऑब्जेक्ट है, इमेज I पे बनती है. उन्होंने कैसे बनाई है? विद द हेल्प ऑफ B, क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जितने एंगल पे रे आ रही है पहले वो हम मेजर कर लेंगे, देन वी कैन ड्रॉ image I with the help of the protractor. Yes, these are some terms and these are statements. Can you match them? Law of reflection. Law of reflection. I have already told you what is law of reflection. Angle of reflection, angle of incidence, reflected ray rotate at an angle of 2 theta, or angle of incidence is equal to angle of reflection or virtual image. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Mirror tilted at an angle of theta, then the इमेज जो होती है वो कितना रोटेट कर जाती है? रिफ्लेक्टेड रे वुड रोटेट एट एन एंगल ऑफ 2 थीटा. एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Plane mirror. Which type of image is formed by plane mirror? Virtual image. Angle between incoming ray and normal
द कॉन्सेप्ट मैप जो हमने अभी डिस्कस किया कि इमेज इरेक्ट बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, वो सारा इसमें डिस्कस किया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम बाय एन एंगल थीटा रोटेट करते हैं ऑब्जेक्ट को तो रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट हो जाती है? बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा। नाउ हियर इज इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। वी हैव डिस्कस्ड इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल अपराइट मीन्स कि जो उसका डोरेमोन का सिर था वो ऊपर ही नजर आ रहा था, जो लेग्स थे वो नीचे नजर आ रहे थे। दिस इज कॉल्ड अपराइट। सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है। लेटरली इन्वर्टेड जो हमने एम्बुलेंस में डिस्कस किया कि वो है तो सीधा नहीं था, बट जब हमने इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा तो क्या हो गया? बिल्कुल सीधा हो गया। दिस इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड एंड अपीयर एट अ सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस भी हमने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज। नाउ एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर, जितना दूर होएगा ऑब्जेक्ट उतनी दूर ही क्या बनेगी? उसकी इमेज बनेगी। नाउ आई हैव अ क्विज फॉर यू। Now, which of the following describes an image formed by a plane mirror? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बता रहा है कि इमेज जो बन रही है प्लेन मिरर से? इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इरेक्ट एंड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओनली रेज योर हैंड्स। Erect and same size as the Yes, erect and same size as that of the object. Next one is, you are observing your image in a plane mirror. In a plane mirror standing 3 meters away from the mirror. If you now step 2 meters backward, what is the distance between you and your image? क्या बोला उसने कि यहाँ पे मिरर है, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है इनिशियली। उसके बाद अगर 2 मीटर का डिस्टेंस और बढ़ा दिया तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड इमेज? इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होएगा? लास्ट इट्स 10 मीटर। वेरी गुड बैटो। 10 मीटर क्यों है? क्योंकि 5 मीटर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज एंड 5 मीटर डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम द इमेज। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? 10 मीटर। Yes, next one is the plane mirror reflection of the word sense would be, it is like ambulance word है ना? इसकी रिफ्लेक्शन आपको मिरर में कैसी नजर आएगी? फर्स्ट ऑप्शन में से है कि सेकंड में है, थर्ड में है कि फोर्थ में है? बी ऑप्शन। वेरी गुड बैठो। व्हाई इट इज बी ऑप्शन? क्या होता है? जो वर्ड है वो पूरा रोटेट हो जाना है। जो लास्ट वाली ई है वो फ्रंट पे आ जाएगी, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड पे आ जाएगा, जो थर्ड लास्ट है वो थर्ड पे आ जाएगा। Now, which of the following is not a characteristics of an image formed by a plane mirror? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? फर्स्ट वन इज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये है कि नहीं है? है। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर। इमेज इज इरेक्ट, ये है कि नहीं है? है। थर्ड वन इज इमेज इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ये ठीक है कि गलत है? ठीक है।
Now, image is closer to the mirror than the object. Is it true? No. Because image is at the same distance as that of the object which is from the mirror. Yes. An image which can be obtained on a screen is called a dash image. जो इमेज हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं वो कौन सी है? वर्चुअल, इरेक्ट, रियल और रिफ्लेक्टिव. Third is it's virtual because I have already told you that image formed in case of plane mirror is virtual because क्योंकि ये स्क्रीन पे हम इसको obtain नहीं कर सकते. An image can be obtained on a sorry बच्चे, image cannot be obtained on the screen, so here it's my mistake. I repeat it again. An image which can be obtained on a screen is called real image, but in case of plane mirror it is virtual image. जब भी प्लेन मिरर होता है उसमें वर्चुअल बनती है, बट यहाँ पे उसने बोला कि स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है. अगर स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है तो दैट मींस इट इज अ रियल इमेज. अगर यहाँ पे लिखा होता कि इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही तो हमारा क्या आना था? वर्चुअल इमेज. Image formation in plane mirrors. A mirror is a polished surface that reflects light waves. A plane mirror is flat, like a geometric plane. When a ray of light strikes a plane mirror, the direction is changed so that the ray passes back in the direction from which it originated. If we draw an imaginary line, referred to as the normal, which runs perpendicular to the plane mirror, the angle created between the incoming ray and the normal will be the angle of incidence. The angle created between the reflected ray and the normal is the angle of reflection. The law of reflection states that the angle of incidence will be equal to the angle of reflection. When we tilt the mirror at an angle theta, the reflected ray will rotate through an angle of 2 theta. If we place a lighted candle in front of a mirror at a distance of x, we will see an image of the candle at a distance of x, seemingly behind the mirror. Image is virtual, will be upright and cannot be captured on screen. Let's look at the mechanism of the image's formation. The rays from the candle will strike the mirror's surface at different angles and be reflected. If we projected the reflected rays behind the mirror, they would converge at a point, forming a virtual image. The distance between the virtual image and the mirror will be the same as that of the distance between the object and the mirror. Although it is upright, an image in the plane mirror will be laterally inverted. To check this, let's hold the word ambulance in front of a mirror. The word will appear reversed.
It is for this reason the word is reversed when painted on the front of emergency vehicles. It can be read correctly in the rear view mirror. A plane mirror will produce an image that is virtual, upright, and the same size as the original object. It will also appear at the same distance as the object is from the mirror, but it will be laterally inverted. Summary. A mirror is a polished surface that reflects light waves. A plane mirror is flat, like a geometric plane. A plane mirror will produce an image that is virtual, upright, and the same size as the original object. It will also appear at the same distance as the object is from the mirror, but it will be laterally inverted. यस तो ये सारे पॉइंट्स वही थे जो हमने डिस्कस किया कि जो लाइट आती है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए वही सारे यहाँ पे एक्सप्लेन किए उन्होंने. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल लर्न अबाउट स्फेरिकल मिरर्स.